एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ध्रुव भट्टराई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः निगदति जलवायु परिवर्तनस्य प्रभावस्य न्यूनीकरणाय नेपालेन विहितस्य प्रयासस्य विषये विश्व समुदायः विज्ञाप्यते। संयुक्त अरब इमिरेट्स देशस्य कृते नेपाली राजदूतेन तेजबहादुर छेत्री तेनेन ह्यः आयोजितं स्वागत समारोहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अवदत् कोप 28 सम्मेलने जलवायु परिवर्तनेन नेपाली सृष्टस्य प्रभावस्य क्षतिपूर्ते रूपेण वित्तीयस्य प्राविधिकस्य च अधिकारस्य विषय सबलतया पुरस्क्रियते। कोप 28 सम्मेलने सहभागिताय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विधाय दुबई स्थानं प्राप्तः प्रधानमन्त्री प्रचण्डः जलवायु परिवर्तनस्य कारणेन नेपाल सदृशै राष्ट्रे षोडव्यस्य प्रभावस्य विषयेऽपि विश्व समुदायस्य ध्यानाकर्षणं कार्यते इति अज्ञापयत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः भविष्यति विधास्यमाने निर्वाचने आभिषं विकीर्ण रूपेण विद्यमानानां नेपालिनां कृते मतदानस्य व्यवस्थायै प्रयत्न जायमानस्थिति असूचयत्। तदवसरे संयुक्त अरब इमिरेट्स देशस्य कृते नेपाली राजदूत छेत्री संयुक्त अरब इमिरेट्स नेपालमध्ये व्यापार पर्यटन प्रविधीनां क्षेत्रेषु सहकार्य विहिते सति नेपालस्य आर्थिक विकासे महत् योगदानं भविष्यति इति विचारम् अभिव्यनक। सर्वकारेण खाद्य पोषण सुरक्षा योजनाय विश्वकोषात् प्राप्स्यमानं कोटि $200 अमेरिकी मुद्राणां परिमाणस्य अनुदान सहायतं स्वीकर्तुं निर्णीतं वर्तते। मन्त्री परिषद एतन्मासस्य सप्तम त्रयोदश दिवसयो उपविष्टयो उपवेशयो निर्णयं सार्वजनिकर्तुं ह्यः सिंहप्रासादे आयोजिते पत्रकार सम्मेलने सर्वकारस्य प्रवक्ता संचार सूचना प्रविधि मन्त्री च रेखा शर्मा खाद्य पोषण सुरक्षा योजनाय द्वितीय चरणाय अनुदानमेतत् प्राप्स्यति इति अज्ञापयत्। मन्त्री परिषद उपवेशेन प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रे स्विट्जरलैण्ड सर्वकारेण प्रदास्यमानं 65 कोटीनां रूप्यकाणां अनुदान सहायतं स्वीकर्तुं वैदेशिक वृत्त्युपार्जन न्यायाधिकरणस्य अध्यक्ष पदे दीपाल वर्तिन उच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशं कृष्णगिरी इत्यमुं सैनिक विशेष न्यायालयस्य अध्यक्ष पदे च पाटन वर्तिन उच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशं लेखनाथ पौडेलं निर्धारयितुं च निर्णीतमस्ति। उपवेशेन राष्ट्रिय जनसञ्चार सम्बद्ध विधेयकस्य नेपाल मीडिया काउन्सिल सम्बद्ध विधेयकस्य सामाजिक सञ्जालस्य प्रयोगस्य नियमन सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बद्धस्य विधेयकस्य च निर्माणाय सैद्धान्तिक सहमतिं दातुं निर्णीतमिति सर्वकारस्य प्रवक्ता संचार सूचना प्रविधि मन्त्री च रेखा शर्मा असूचयत्। एवमेव मन्त्री परिषद उपवेशेन स्वास्थ्य सुरक्षण कोष समिति अध्यक्ष डाक्टर गुणराज लोहनी इत्यमुं नियुक्तुं निर्णीतं वर्तते। राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन राजदूतद्वया आवासितेर राजदूतस्य दायित्वं निर्धारितं वर्तते। राष्ट्रपतिना पौडेलेन नेपालस्य संविधानस्य अनुसारेण मन्त्री परिषदः परामर्शेन दक्षिण अफ्रिका देशस्य कृते नेपालस्य आवासीय राजदूतः दानबहादुर तामाङ गणतन्त्र मोजाम्बिक देशाय स्विट्जरल्याण्ड देशस्य कृते नेपालस्य आवासीय राजदूत रामप्रसाद सुवेदी इटाली देशाय च आवासितेर नेपाली राजदूतपदे नियुक्तौ इति राष्ट्रपति कार्यालय ज्ञापयति। उप प्रधान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठः कथयति जाजरकोट भूकम्पेन प्रभावितानां नागरिकाणां जीवनयापनं सहजीकर्तुं सर्वकारेण अस्थायी आवासानां निर्माण कार्यं प्राथमिकतया अग्रे वर्धापितं वर्तते। राष्ट्रिय सभाया राष्ट्रिय सम्बद्धता समन्वय समिति गत दिवसे उपवेशे गृहमन्त्री श्रेष्ठः पटवेश्मनां अधो निवसतः भूकम्प पीडितान् जनान् शीघ्रातिशीघ्रं छदे अध आनेतुं सर्वकार केन्द्रितो स्थिति अवदत्। शैत्यकाले पटवेश्मनां अधो निवस भूकम्प पीडिता जना अतिरिक्त समस्या न सहेरन् इत्युद्देश्येन जनपद सुरक्षा समितिर माध्यमेन सर्वकारेण नेपाली सेनां सशस्त्र प्रहरीणां नेपाल प्रहरीणां च अस्थायी आवासानां निर्माणार्थं योजयितुं निर्णीतमिति उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठः असूचयत्। नेकपा एमाले दलस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भाषते समृद्धो नेपाल सुखिनो नेपालिनश्चेति परिकल्पनाय पूर्णस्य अभियानम् एमाले दलेन प्रारब्धं वर्तते। ह्यः बैतडी जनपदस्य झुलाघाट स्थाने पुष्पलाल मध्य पर्वतीय लोकमार्ग केन्द्रितां समृद्ध्यर्थ समायोजितां संकल्प यात्रां शुभारम्भमाण अध्यक्ष ओली राजनीतिज्ञ अस्थिरताय समापनाय अनुकूल परिवर्तनाय च अभियानं फलदायी शेष्यते इति विश्वासं व्यक्तवान्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी दलस्य अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कथयति दीर्घकालिक संघर्षस्य पश्चात् प्राप्तं लोकतन्त्रं रक्षितुं सर्वैर्मिलित अग्रे वर्धनम् आवश्यकं वर्तते। निरङ्कुश शासन सत्ताय अन्ताय लोकतन्त्राय च जनताय दीर्घ संघर्ष बलिदानं च विहितेस्त इत्यतः एतत् संरक्षणस्य दायित्वमपि जनता एव स्कन्धे वर्तते इति असौ अगदत्। धनुषा जनपदस्य जनकनन्दनी ग्रामपालिकाया खजुर स्थाने आयोजितायं जनसभायं अध्यक्षो नेपालः राजसंस्था जनताय अपसारितास्ति इत्यतः अतः परं राजतन्त्रस्य परिकल्पनम् औचित्यहीनम् अस्तीति अवोचत्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिन अस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षिण सी लिन्स इत्यनेन सह यो मेलवार्तं व्यदधात्। अस्ट्रेलिया देशस्य संसदीय सम्पन्ने तस्मिन् मेलने अनयोर्मध्ये नेपाल अस्ट्रेलिया देशहरू विद्यमानाय संरचनाय द्विपक्षीय भ्रमणस्य आदान प्रदानस्य च विषयो विमृष्टमिति क्यानबेरा स्थितो नेपाली राजदूतावासः सूचयति। द्वयोरव देशयो सभाध्यक्षाभ्यां संसदीयाभ्यासस्य संघीय संसद गतिविधीनां च विषयो अपि विमृष्टम् आसीत्। पाटन वर्तिना उच्च न्यायालय असैव मार्गशीर्ष मासस्य पञ्चमे दिवसे प्रारब्धं कृत्रिम भूटान दिशे शरणार्थी प्रकरणस्य श्रवणं सम्पन्नमस्ति। न्यायाधीशयो प्रकाश खरेलस्य जनक पाण्डे भिदस्य च न्यायपीठे ह्यः श्रवणं सम्पन्नमस्ति। अद्य निर्णयस्य श्रावणं सम्भवम् अस्तीति पाटनोच्च न्यायालयस्य प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराई अज्ञापयत्। काष्ठमण्डप जनपद न्यायालयेन प्रदत्तस्य कारावासनादेशस्य विरुद्धे पञ्जीकारितस्य पुनरावेदन निवेदनस्य श्रवणं समाप्य न्यायालयेन अद्य निर्णयस्त्राव्यमाणो वर्तते। जुम्ला महेन्द्रनगर धनकुटा हेटौडा वर्तेषु उच्च न्यायालयेषु गत दिवसे श्रव्यदृश्यमाध्यमेन न्यायिक प्रकरणानां श्रवणं प्रारब्धं वर्तते। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ ह्यः सर्वोच्च न्यायालये पत्रकार सम्मेलनम् आयोज्य एतेषु चतुर्षु उच्च न्यायालयेषु श्रव्यदृश्यमाध्यमेन श्रवणं प्रारभत। तदवधौ असौ प्रविधिर्माध्यमेन न्यायिक प्रकरणानां श्रवण सम्पादनेन समय संचितिं न्यून व्ययीभवनम् अशेष जनता न्याय अभिगमं च उद्दिश्य सेवेयं प्रारब्धेति अज्ञापयत्। राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षण विभागेन गण्डकं निहत्य गण्डक शृङ्गस्य अवैध रूपेण नयनानयने विक्रय वितरणे च संलग्नता आरोपेण 8 जना निगृहीता वर्तन्ते। एते जना ह्यः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जस्य मुख्यालय कसरा स्थाने सार्वजनिकृताः सन्ति। विभागस्य महानिर्देशकस्य डाक्टर सिन्धु प्रसाद ढुङ्गाना भिदस्य अनुसारेण निगृहीतेषु जनेषु मकवानपुर जनपदस्य हेटौडा उपमहानगरपालिका तृतीयवडा क्षेत्रस्य लेबर्ट स्थान निवासी 33 वर्षीय रमेश खाती गण्डक शृङ्गस्य अवैधानिक रूपेण विक्रय वितरणस्य मुख्य योजनाकारो वर्तते। निगृहीतेभ्यो जनेभ्यः गण्डकस्य शृङ्गद्वयं भूसुण्डीद्वयं परशु भूसुण्ड्यां प्रयुज्यमान लोहखण्ड विस्फोटक पदार्थ मोटरसाइकल यानद्वयं चेति सामग्र्यः निगृहीता वर्तन्ते। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया गदति संविधाने विद्यमानाय व्यवस्थाय अनुसार निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकं निर्मितं वर्तते। दलित महिला केन्द्र नेपालेन ह्यः काष्ठमण्डपे आयोजितायं निर्वाचन व्यय व्यवस्थापन विधेयकस्य सम्बन्धी सांसदै सह अन्तर्क्रियायां प्रमुखायुक्त थपलिया प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभायश्च समितिभिः महिला सञ्जालेन विविध विज्ञै पञ्चविंशत्या सम्बद्ध पक्षैः सह विहितस्य परामर्शनुसारेण प्रदेश स्थानीय स्तरेभ्यः प्राप्तं लिखितं परामर्शनं संकलय्य च आयोगेन विधेयकं निर्मितमस्तीति असूचयत्। धूलिखेल चिकित्सालयस्य आयोजनायां स्वास्थ्य क्षेत्रे विपद पूर्वकारेण व्यवस्थापनेन च सम्बद्धं प्रथमम् अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनम् आयोज्यते। विपद समय संकटं निवारयितुं पूर्वकार्येषु चिकित्सालये कथं विधानि कार्याणि विधेयानि व्यवस्थापकीय पूर्वकार्यं कीदृशं विधातव्यं चेति विषये चिकित्सालयेषु संचार समन्वयस्य उद्देश्येन प्रथमम् अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनम् आयोज्यमानमस्तीति ह्यः धूलिखेलस्थाने आयोजिते पत्रकार सम्मेलने चिकित्सालयस्य आकस्मिक विभागस्य चिकित्सक सम्झना बस्नेत अज्ञापयत्। अद्यत दिनत्रयं यावत् सञ्चाल्यमाने सम्मेलने चिकित्सका स्वास्थ्यकर्मी चेति संग्राह्य भारतस्य 10 नेपालस्य 74 सहभागिनो जायमाना वर्तन्ते। इति समाचारः।